मैं एक वीडियो पे काम कर रही थी and I got some messages on Instagram कि I can't see your YouTube. I was like, what? अगर आपकी पाकिस्तानी ऑडियंस है, you might be somewhere like $500 to $800, but अगर आपकी like 100,000 consistently है और उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं तो maybe you can touch $1,000 in a month. प्रॉक्सी से आप कर रहे होते थे तो जब वो बैन था, how did you get the motivation? Concoctions बनाए, hair serums बनाए, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा था और मैं literally गंजी हो रही थी. What was the most difficult thing during the journey of content creation? जाके अपने lips को fix करो, आप पे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं. मतलब can't do anything about it, that's my taste. They expect you to be good all the time. अगर आप कुछ बुरा बोल दें, get a lot of bashing. That's really overwhelming. Like when people come and I'm like, oh hi. आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करें and then it doesn't get the feedback you were expecting, so it kind of messes with your positivity and your motivation. जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि like इतनी मेहनत गई होगी. You don't know what is You going to never be know. successful. Exactly. Anything can work and you do everything in it might not work. अस्सलाम वालेकुम अनुषे, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम महम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टू योर ब्यूटीफुल प्लेस और अपना वक्त देने के लिए भी. Thank you for coming. I mean, I'm really excited. I am also very excited to know a journey of an Instagrammer, not just an Instagrammer, a beautiful content creator जिसने एक अरसा लगाकर मेहनत कर इस जर्नी को बहुत कामयाब बनाया है. And a lot of young not entrepreneurs exactly, but young content creators and Instagrammers would like to know your journey. So starting from कहाँ से शुरू हुई, कब आइडिया आया, साइड हसल थी, वगैरह वगैरह. So it all started when I was doing my ACCA back in 2012. मैंने बहुत सारे मतलब मेकअप ब्यूटी रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किया. उसमें मुझे एक सारा हसन का एक ब्लॉग होता था, ब्यूटी ब्लॉग, जिसमें वो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस करती थी, तो वो मैं पढ़ती थी. एंड देन कुछ टाइम के बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब. तो उस वक्त यूट्यूब बैंड था, बट लाइक प्रॉक्सी के थ्रू वी वुड वॉच दीज वीडियोज़. और मुझे याद है मैं बहुत सारे लाइक मेकअप गुरुज को देखती थी यूट्यूब पे, और फिर उससे मुझे शौक हुआ कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ. आई हैव टाइम ड्यूरिंग द वीक, मेरी क्लासेस वीकेंड्स पे होती हैं, तो लाइक ड्यूरिंग द वीक कुछ एक्टिविटी हो सकती है. I used to love. I started off as a beauty blogger, but like वो slowly transition हुआ आगे जाके, which I'll talk about. But that's what it started as. It started from a website. मैंने अपनी WordPress पे, बल्कि नहीं, WordPress पे पहले Blogspot होता था, वहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाई. अच्छा. And then it sort of became a website called anushae.com. वहाँ पे मैं अपने reviews post करती थी makeup products पे. And then वो slowly शौक बढ़ा to start making video content. एंड देन आई रिमेंबर एक मेरा ACCA का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो मेरे डैड ने मुझे एक वीडियो कैमरा गिफ्ट किया था. अच्छा. या सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. यू ऑलवेज हैड अ सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली? या माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव. मतलब उनको लगता था कि ये एक पैशन चीज़ है, अगर पढ़ाई भी चल रही है साथ में, ग्रेड्स भी अच्छा आ रहे हैं, तो फिर लाइक इफ आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग व्हाई नॉट. तो वो मतलब नोबडी न्यू कि इट वुड एक्चुअली एवर बिकम लाइक समथिंग मोर देन या मेन हसल, लाइक समथिंग मोर देन इट वाज. तो बस ऐसे स्टार्ट किया मैंने, एंड देन आई स्टार्ट पोस्टिंग यूट्यूब वीडियोस, एंड वन थिंग लेड टू अनदर, आई वेंट ऑन इंस्टाग्राम. ऑल्सो एट दैट टाइम प्रॉक्सी से आप कर रहे होते थे, तो जब वो बैन था, हाउ डिड यू गेट द मोटिवेशन कि मैं ओह गॉड, मैं ये सोचती हूँ लाइक लिटरली इफ आई स्टार्ट डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ लाइक मेहनत एंड आई स्टार्ट पोस्टिंग और कोई ना देखे, तो मैं लिटरली 2 दिन में आई प्रॉब्ली गिव अप. बट उस टाइम पे पता नहीं क्या, एक वो आप एक यंग होते हैं, आप बहुत पैशनेट होते हैं अपनी चीज़ों के बारे में, तो आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं. तो आई वुड गेट लाइक 200-300 व्यूज़ ऑन वीडियो. और ये कितने टाइम तक चलता रहा? Probably like a year and a half, जब तक YouTube like unban नहीं हुआ, and then we could access, like everybody in Pakistan could access it. ठीक है. तो उस वक्त तक I would post and I would get like 200. But you were still consistent. I was like I would post every week. I would come up with new ideas and post every week. Okay. लेकिन Instagram आपने बाद में शुरू किया? Instagram मैंने बहुत बाद में शुरू किया. It was 2018 जब मैंने properly Instagram पोस्ट करना शुरू किया था. ओके, ठीक है. सो जब यूट्यूब का बैन ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर आप ऑर्गेनिकली ही आपको रीच मिलनी शुरू हुई, या यू डिड समथिंग? सो इट्स वियर्ड कि आज तक जितने भी लोग मुझसे आके मिलते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम एट अ मॉल और एन इवेंट, जो लोग आके बोलते हैं कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, तो वो सब उस वहीं से आता है, लाइक यूट्यूब के व्यूअर्स होते हैं. सो आई फील लाइक कि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान. तो आई थिंक जब ऑडियंस को भी यूट्यूब का एक्सेस मिला, तो वो भी थोड़ा देखना चाहते थे कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, यू नो, इंटरनेशनल तो क्रिएटर्स हैं. तो उससे काफ़ी लोग आए, तो ऑर्गेनिकली काफ़ी रीच मिली, बिकॉज बहुत कम फीमेल यूट्यूबर्स थी, ज़्यादातर मेल थे. 1-2 ही थी शायद. उस टाइम पे कंपटीशन इतना नहीं. हाँ, कंपटीशन नहीं था, और लोग इतना पोस्ट भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं था कि कैसे वीडियोस बनाना है, एडिट करना है, पोस्ट करना है, क्या हो सकता है और किस तरह. You learned editing and everything? Oh, everything on the job myself. Yeah. Okay. Yeah.
अच्छा, ठीक है. So today you are continuing it as a main hustle. YouTube is still a side hustle, but like content creation is a main hustle for me. It became a main hustle in 2021 when I left my job. और उसके बाद मैंने बोला कि बस अब सिर्फ यही करना है. तो YouTube is still, I'm doing YouTube still, and it's like still a very passionate project of mine क्योंकि I feel like कि अभी advertisers थोड़े कम हैं YouTube पे. Okay. Compared to Instagram. So ये YouTube monetization के बाद से you're not into. I am. So YouTube monetization पाकिस्तान में इतनी मतलब Earnings इतनी नहीं हाँ है. earnings इतनी नहीं है. आपको बहुत सारे views चाहिए to make money with YouTube monetization in Pakistan. But वैसे yeah monetization है थोड़े बहुत income होती है वहाँ. So let's talk about core content creation. जब आपने इसको as a main hustle start किया, how much time does it take? So I think it depends बंदे to like person to person it depends. कुछ लोगों को मतलब overnight लोग वायरल हो जाते हैं, but it was a long journey for me. I think जब मैंने start किया था तो audience के लिए YouTube एक बहुत नई चीज़ थी, and मैंने ना vlogs और beauty videos post करना शुरू की थी, तो वो भी एक थोड़ी सी नई चीज़ थी like for पाकिस्तानी audience. तो लोगों को मतलब उसके बारे में एक तो awareness क्रिएट होना कि YouTube देखना और ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो थोड़ा सा स्लो था, बट आई फील लाइक कि एक पॉइंट पे आके इट डज पिक अप. तो आई वुड से कि एटलीस्ट 2 years ऑफ हार्ड वर्क के बाद आई वुड से कि आई हैड माई YouTube गोइंग समवेयर एंड आई हैड एन ऑडियंस जो कि मेरी वीडियोस देखती है, एक्सपेक्ट करती है कि हर हफ्ते मैं एक वीडियो डालूंगी. सो लाइक 2 years एटलीस्ट. ओके. सो लेकिन उस वक्त आप कितना टाइम दे रही थी और अब आप कितना टाइम दे रही हैं? उस वक्त मैं बहुत टाइम दे रही थी और अब मैं इतना टाइम नहीं दे रही YouTube को. अच्छा, उल्टा हिसाब है. उल्टा हिसाब हो गया क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ YouTube था. दैट वाज इट वाज आई नेवर थॉट कि इट वुड बी समथिंग लाइक अ जॉब फॉर मी कि मैं सबको छोड़ के दिस इज वुड बी माई ब्रेड एंड बटर. तो मैं बस ऐसे ही उसको एज अ पैशन प्रोजेक्ट रखती थी कि ठीक है वीडियो बना ली, पोस्ट कर दी और कुछ नया कर लिया उसके लिए. मगर अब यह है कि बिकॉज अब पैसे भी कमाने हैं और लाइफ भी जीनी है और अर्निंग्स मतलब सेविंग भी करनी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली अब प्रायोरिटी वो होती है कि पेड वर्क जो आ रहा है तो फिर आप वो करें एंड देन फिर आप अपने यूट्यूब को दें. तो यूट्यूब से आई डू ब्रांड कोलैबोरेशंस ऑन यूट्यूब, बट आई फील लाइक कि यूट्यूब टेक्स मोर टाइम क्योंकि इंस्टाग्राम का फॉर्मेट ये होता है कि लाइक 1 मिनट के अंदर की वीडियो है, सो इट्स मोर क्विक. यूट्यूब पे फिर आई लाइक टू पोस्ट लॉन्गर स्टफ सो दैट टेक्स मोर टाइम टू फिल्म, तो मोर एफर्ट. सो व्हेन व्हाट वाज द मेन पॉइंट व्हेन यू थॉट कि अभी मुझे इसको एज अ मेन हसल स्टार्ट करना है, बिकॉज मे बी एडवर्टाइजर्स स्टार्टेड कमिंग इन और व्हाट? यस, आई थिंक जब कोविड हिट हुआ था और हमारे पास टाइम ज़्यादा था घर पे होने का, तो मैंने नोटिस ये किया कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन वाचिंग वीडियोस. तो मैंने ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी और फिर उस तरह से एडवर्टाइजमेंट भी आती गई कि आपके पास इतनी व्यूअरशिप है तो वी वुड लाइक टू वर्क विद यू. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दिस कुड बी लाइक अ पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड लाइक एक साल में मैंने और काम किया. सो यू गॉट दैट फ्रॉम कोविड टाइम्स? या कोविड, आई थिंक एवरीबडी ब्लू अप आफ्टर कोविड. जो बूम इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आया है वो कोविड के टाइम पे आया था. 2019-2020 के बीच में I feel like बहुत सारे लोगों को काम मिला है. So since this is your main hustle and you're full time working on it, spending time, I don't know how much hours of a day you spend on it, or maybe शायद ये full time है तो शायद दिन हो शायद रात हो, whenever you find time you start making content. It's like 7 days a week. Okay. Yeah. So I would like to talk about the earnings because a lot of aspiring content creators would like to know, क्योंकि होता ही है कि as a side hustle तो वो कर रहे होते हैं, but leaving their jobs, जैसे I would like to ask, आपने भी मुझे off camera भी बताया था that you left your job. That is a tough decision, risky one as well, and of course we have faith in ourselves and Allah Mia as well, but again ये एक we have to take a leap of faith because if you're continuing content creation as a main hustle, then you have nothing else to exactly to look about. मतलब that's it. तो यार अर्निंग्स के साथ मैं ये बोलूँगी कि if somebody wants to leave their job and get into content creation, उनकी जो साइड हसल है वो उनको इतना दे कि उनकी जो जॉब है वो कवर करे and then something on top. Okay. So once it cross that benchmark जो आपकी जॉब से आपको मिल रहा है, only then तो मैं बोलता कि अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो maybe I can double it, और maybe शायद मैं और मेहनत अगर 7 working days a week मैं कर ही रही हूँ और मैं खुशी कर रही हूँ, मुझे ये जॉब फील नहीं हो रही, तो फिर डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है. So how about earning from Instagram and YouTube? Like if you
could share few numbers that Instagram could, or not yours, like generically. Generic, okay. हाँ. So I think ये मतलब मैंने मुख्तलिफ लोगों की जो लाइक जिनसे पता किया है और जिनसे बात हुई है मेरी इन टच, तो अगर आप YouTube पाकिस्तान में कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर गेटिंग लाइक over 100,000 views on every single video, then I think आपका number somewhere around $700 to $1,000 हो सकता है. It could be lower, it depends on your audience, to be very honest. अगर आपकी पाकिस्तानी audience है, you might be somewhere like $500 to $800, but अगर आपकी like 100,000 consistently है और उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो maybe you can touch $1,000 in a month. So you've crossed the monetization wala Yeah, target? yeah. So it took me 2 years to cross it. Like my first $100, it took me 2 years to get them. But then once you hit that $100 mark ना, तो फिर मतलब that's when I noticed कि उसके बाद फिर होता ही रहता है. Like monetization keeps coming. Like but you I get think the views. as far as the country viewership is concerned, तो पाकिस्तान में per view is very less. Very less, yes. अगर मैं यही views किसी बाहर की country में रखूँ ना, तो I'm easily making somewhere around $3,000 plus a month. तो हाँ, ये तो है. A lot of YouTubers are doing this trick. They're not making content or creating content for Pakistani audience. Yeah. And they're creating content for the international audience so that they get views from there. अच्छा, तो ये funny you mentioned that because जब मैंने start किया था, I started posting videos in English. But मुझे बहुत बैकलैश मिली थी फ्रॉम व्यूअर्स कि आप इंग्लिश में बात क्यों कर रही हैं, आप उर्दू में बात करें, आप पाकिस्तान में रहती हैं. पर आपके व्यूअर्स पाकिस्तानी थे ना फिर. हाँ, एग्जैक्टली. मगर आप कैप्चर किस तरह से करते हैं इफ़ यू मेक योर कंटेंट अवेलेबल इन इंग्लिश, राइट? उर्दू तो फिर पाकिस्तानी लोग ही देख सकते हैं. हाँ. पाकिस्तानी लोग मे बी यूएस, आई स्टिल हैव व्यूअर्स इन यूएस एंड कनाडा, जो कि मगर वो सारे पाकिस्तानी हैं जो कि उर्दू समझते हैं. तो लाइक आई थिंक मे बी एडिंग सबटाइटल्स और डूइंग कंटेंट दैट इज इन इंग्लिश विल ओपन अप अ होल न्यू ऑडियंस, जिसमें सिर्फ आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाएंगे पाकिस्तानी ऑडियंस के, and international people. Then you can make more money if you have an international audience. Even sitting in Pakistan, you can make more money. Also, another question, क्योंकि अगर आप let's say somebody is assuming or planning to earn from YouTube, they would need a support from social media. हाँ, because आपको यार it depends. I think social media works. It's like a web. तो अगर आप जितनी जगह पे आपने अपने टांगे डाली हुई है ना, मतलब उतना अच्छा है आपके लिए. लाइक इफ यू आर ऑन यूट्यूब देन मेक श्योर कि आपका एक इंस्टाग्राम भी हो, बिकॉज इफ समबडी डिस्कवर्स यू फ्रॉम इंस्टाग्राम दे कैन कम टू योर यूट्यूब. इफ समबडी डिस्कवर्स यू फ्रॉम यूट्यूब दे कैन गो टू इंस्टाग्राम. ट्विटर मुझे कभी समझ में नहीं आया, बट ट्विटर इट वर्क्स फॉर लॉट ऑफ पीपल एज वेल, एंड आई फील लाइक कि वहाँ पे आपकी फॉलोइंग हो जाए. Takes a lot of time. It takes a lot of time, and I feel like it takes a lot of patience as well. मुझसे इतनी बर्दाश्त नहीं होता ट्विटर का वो जो है. But some people have grown a lot from Twitter. तो that is also good. मतलब जितना सोशल मीडिया होता है. But also there is a problem कि अगर आप 5 जगह पे फोकस कर रहे हैं, you won't be able to focus on one. That's true. Platform. So I think एक प्लेटफॉर्म आपका मेन होना चाहिए कि ये आपको पता है कि this is the platform जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, और बाकी आप साइड प्लेटफॉर्म्स रखें. Okay. You have to divide your energy. That's true. Divide and conquer. Yeah. Okay, so you prioritized YouTube. I used to prioritize YouTube a lot, but मैंने notice किया कि advertisers are willing to advertise more on on Instagram than on YouTube. Like अगर YouTube adverts हैं तो they're less compared to people who want to, because I think audience थोड़ी ज़्यादा है Instagram पे. It's quick format, जैसे TikTok पे it's quick. जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, 1 मिनट में आपका पॉइंट अक्रॉस हो जाता है. आई एम ऑन टिकटॉक, बट आई एम नॉट लाइक, वही बात है ना कि है मगर अभी बहुत एक्टिव नहीं हुआ. Okay. So how to attract advertisers? Just build an audience. They'll come to you. You don't have to go to them. And I think best way यही है कि build an audience, they'll come to you. That's the best way of getting. Because a lot of content creators जिन्होंने initially अभी start किया, एक तो बहुत जल्दी भी होती है ना कि जल्दी से followers बढ़ जाएं, जल्दी से कोई आ जाए, पैसे मिल जाएं. It takes time. Grow organically, and then everything else follows itself. A lot of people are even khair, this has been done, that paid things are up there in terms of followers, in terms of engagement also. So did you ever try this? No, I never, like you're talking about paying for your, no, I actually think is कि मेरा content बहुत lifestyle related था, so I never really, मैंने कोई ad नहीं डाला, because I feel like कि आप उसको किस तरह से like advertise करोगे. Like अगर मेरा कोई product होता तो मैं sell कर रही होती तो मैं बोलती कि हाँ ठीक है मैं ऐसे पैसे डालूंगी and I'll promote it. But it was all very lifestyle related. तो I was always confused कि मैं promote करूँ भी तो किसको और कैसे करूँ. तो I never did it. But so you did it all organically. Yeah, all organically. Yeah.
So YouTube was the first thing that grew organically, and then Instagram sort of just followed. Okay. So algorithm kept changing. ठीक है, Instagram का भी, Facebook. अच्छा, honestly मुझे Facebook का समझ नहीं आता, मैं आदत से मुझे भी समझ नहीं आता honestly. मैं भी आदत से भी डिस्कस कर रही थी, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि Facebook का algorithm is just going shit. It's literally आप कहीं किसी अच्छा I actually started a business recently, तो उसमें मैंने ना that's when I advertised for my product. एंड ऑनेस्टली जिस तरह के मुझे फॉलोअर्स आए, ये तो मैंने एडवर्टाइज ही नहीं किया था, ये कौन लोग हैं? तो वो बहुत ही लाइक समझ में नहीं आता. ट्रू, आई डोंट. अच्छा, ऑर्गेनिक भी बहुत बुरी हुई है. इवन आई ट्राइड फॉर द स्पॉन्सर्ड वन, तो उसमें आई डेलिबरेटली टारगेटेड एड्स मैनेजर के थ्रू जाके यूनिवर्सिटीज, क्योंकि आई टारगेट स्टूडेंट्स. उसके बाद ऐसी आवाम थी, I was like, यार, क्या, they're not even university students. Exactly. Maybe they're posing as university students on Facebook. Facebook is being ditched में. Yeah, maybe Facebook में कुछ मसला है. So अगर हम Instagram के algorithm की बात करें, let's talk about this. फिर हम YouTube पे भी आएंगे. So it kept on changing. What tips you'd like to give to young content creators? Oh God. Okay, I feel like Instagram को समझना ना बहुत मुश्किल है. I've been like posting content on Instagram for I think 4 years now, and honestly I struggle with it sometimes because the algorithm is tricky. But एक चीज़ है कि be consistent. एवरी अदर डे पोस्ट डालें. इतना भी नहीं कि लोग पागल हो जाए देख के कि बस बहुत हो गया, हटाओ इसको. बट ऐसा दिन में एक, 2 दिन में, या दिन में एक. अगर आप लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हैं, फैशन कंटेंट क्रिएटर हैं, एक 1 पोस्ट अ डे इज प्रीटी गुड. बिकॉज आप उसमें बहुत सारे डालेंगे तो शायद क्वालिटी आप ना मेंटेन कर सकें, बिकॉज यू क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ. तो लाइक एक 1 पोस्ट अ डे इज गुड. मेक श्योर द क्वालिटी इज गुड. मेक श्योर कि यूर योर सेल्फ. बिकॉज आई फील लाइक कि अगर आप इंस्टाग्राम पे आप ईजिली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं लोगों से. तो अगर आप किसी ने कोई चीज़ डाली और आप भी वही चीज़ बस थोड़ा सा आप चेंज करके डाल रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल है. थोड़ा कम अप विद ओरिजिनल आइडियाज, अब और आइडियाज लेके आप उसको थोड़ा सा ट्वीक कर लें. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द यूनिकनेस एंड बीइंग कंसिस्टेंट. दोज आर द 2 थिंग्स जो कि आई थिंक हर एल्गोरिथम को सर्वाइव कर लेती हैं. Okay. Yeah. So immediately making this content creation wala game as your bread and butter, is this the right thing to do? Honestly, I want to say yes, but it's very like economy driven. Because मतलब what you advertisers कब आते हैं when the economy is stable, when there is enough purchasing power for people to actually buy what the advertiser is promoting. तो अभी मतलब हालात ऐसे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी लाइक किसी भी जॉब के बारे में नहीं कह सकते. बट आई वांट टू से कि लोग लाइक एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइज करना नहीं छोड़ेंगे. आई मीन अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो एडवर्टाइजमेंट तो कहीं नहीं जा रही. मे बी द फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट विल चेंज, मगर एडवर्टाइजमेंट रहेगी. तो आई फील लाइक या कंटेंट क्रिएशन इज हियर टू स्टे. मे बी इट विल इवॉल्व with time. Yes. But so can you throw some numbers like related to advertisers? I understand, I do know, but for our audience, how much they pay, how much they could, like, you know, अगर आप कहें वीडियो कंटेंट पे there is a different thing, then अगर आप static post की बात करें there is something different. यार it depends on your audience, your engagement. Advertisers want to see कि आप कितने लोगों को reach कर रहे हैं अपने posts के through. So it could be anywhere between like some like 100,000 से लेके you can go anywhere up to 700,000. Like you can make good money. You can make good money, yeah. Anywhere from 100,000 to 700,000 based on your reach, you can charge for a post. Yeah. तो आप महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं अगर आपकी रीच अच्छी है और आपके पास ऑर्गेनिक रीच है. Okay. So what was the most difficult moment, या मैं पूछूंगी what was the most difficult thing during the journey of content creation? I think time management is difficult because content creation never really felt like a job to me. तो हमेशा ना मतलब क्या बोलते हैं, लाइफ गेट्स इन द वे. तो आपको ना बस अपना टाइम निकाल के उसको मैनेज करना होता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू. हालांकि जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि लाइक इतनी मेहनत गई होगी टाइम मैनेजमेंट में. बट लाइक इफ़ यू वांट टू create good content, then maybe आपको चीज़ें align करनी है. You have to align the videographer, you have to align the concept with the brand, you have to align मतलब everything from set, because you're the like director, producer, actor, editor, everything yourself. So like you need to make sure कि आप किस तरह से वो manage कर रहे हैं and delivering the thing on time. So I feel like that's challenging, and especially after having a baby, I feel like थोड़ा सा ज़्यादा challenging हो गया क्योंकि उसको भी manage करना होता है,
और फिर ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं हर वक्त मैनेज कर रही होती हूँ अपना टाइम। So what is the motivation behind you're able to manage it and you're successfully managing it? यार आई थिंक फैमिली की हेल्प एंड सपोर्ट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन एनी जॉब, नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन, आई फील लाइक. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव हस्बैंड, जिसकी वजह से आई एम लाइक एबल टू मैनेज बोथ द थिंग्स. इट्स टफ बट हो जाता है. मतलब यू जस्ट हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ के यू रियली लाइक डूइंग इट, एंड इफ यू लाइक डूइंग समथिंग देन मेहनत तो करनी पड़ती है उसके लिए. सबसे अच्छी चीज़ क्या है कंटेंट क्रिएशन के बारे में? People recognize you. No, actually that's really overwhelming. Like when people come and I'm like, oh hi, मतलब मैं थोड़ी सी shy हो जाती हूँ. But yeah, that's definitely like आपको मतलब मिलता है कि एक positive feedback मिलता है कि people like your videos. But I think सबसे अच्छी चीज़ about content creation is the freedom that it gives you to express your ideas. True. And put it out there for people to see. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात बोली. सो मैंने एक अजम्पशन की थी कि सबसे अच्छी चीज़ शायद ये हो रिकग्निशन, तो एक और अजम्पशन करूँगी. सबसे बुरी चीज़ ये हो सकती है दैट पीपल बैश एंड यू नो मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर. दे एक्सपेक्ट यू टू बी गुड ऑल द टाइम. अगर आप कुछ बुरा बोल दें, गेट अ लॉट ऑफ बैशिंग. एंड हाउ डू यू हैंडल दैट इफ यू वर यू बैश्ड एनी टाइम? यार okay, so I would agree कि this is a bad thing, but I wouldn't say that's the worst. Okay. And yes, I was bashed for मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के लिए. हर किसी के अपने opinions होते हैं और not everybody can agree with the kind of life you live and the decisions you take. But I feel like कि for me सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि sometimes the glitches on Instagram or like whatever you want to call them, like the algorithm changes. आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करें and then it doesn't get the feedback you were expecting. So it kind of messes with your positivity and your motivation कि like I was really expecting a big like a better. यार इतनी मेहनत की थी इतनी मैंने. मेहनत की और ये और फिर किसी चीज़ पे आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हो, वो एकदम से हिट हो जाती है, वो बिल्कुल वायरल हो जाती है. चले बैलेंस हो जाता है. एग्जैक्टली बैलेंस हो जाता है, बट इट लाइक अपने आप को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रखना कि कुछ भी हो सकता है कभी भी किसी भी वक्त. तो इसीलिए तो whenever I ask about the tips, तो जो भी content creators होते हैं या if you talk about Instagram as well, you don't know what is you going never to be know. successful. Exactly, anything can work and you do everything and it might not work. It really depends. You were discussing about Dana Neer. Yeah, like exactly एकदम से like I don't think उसने भी कभी सोचा होगा कि वो एकदम से इतनी viral हो जाएगी. Like you know overnight she must have woken up and be like, wow, is this my life right now? So yeah. So virality is unexpected, but again, the consistency is the key. Consistency is key, yeah. Demotivate नहीं होना है basically. Okay, so we talked about the difficult thing. We talked about अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है. Now I'll ask about the challenging moment. ठीक है. Challenging moment. I want to say कि इतना कोई ऐसा कोई next level challenging moment आया नहीं है. या आया भी है तो maybe I've handled in a way कि it didn't really feel. Oh yes, I remember. Okay, so this happened recently when my YouTube got hijacked. Seriously? Yes, this. Oh my shit. God. Okay, so हुआ ये कि I was just working, मैं वीडियो पे काम कर रही थी, and I got some messages on Instagram कि I can't see your YouTube. I was like what? अच्छा उसी दिन सुबह के वक्त ना मैं अपनी email चेक कर रही थी तो मैं लॉग आउट हुई थी अपनी email ID से, तो मैं that's strange क्योंकि मेरी लॉग इन होती हैं. है I try to log in to my YouTube. Password change, email ID does not exist. YouTube channel मैं अलग से search करी हूँ, it's not there. Everything's gone. All my videos are gone. Freaking out, like literally I'm freaking out. I'm crying. मैंने जल्दी से like I called Numan, my husband. I was like, you need to come home right now. वो office में थे. My YouTube is gone. मेरी मेहनत, मेरी इतने सालों की मेहनत. फिर हमने मतलब मुख्तलिफ YouTube videos देखी to how to get it back. So basically somebody hacked into my ID and they put in a virus in my computer, ransomware के नाम से कि you have to pay and then you'll get your files back. Okay. And then मतलब कोई next level scene था तो हम लोग ने YouTube को complain की and then like very luckily they were like super fast in replying. उन्होंने फौरन से like within 24 hours they were able to get my YouTube back. आपने YouTube को कहाँ approach किया? I emailed them. Okay. There's a form that you fill and then उसमें एक support का option होता है, you email them. And then they like get back to you. आप अपनी सारी details दें कि आपने last video कब upload की थी. Like they'll ask you some questions and then they'll get you your YouTube back. Okay. मतलब thankfully that YouTube helped me getting it. Help you getting it. Yeah, it helped. They helped me get it back. All my videos were there. My content was still there. And जब तक मैंने उनको okay नहीं बोला कि like everything is okay, everything is like back to normal, कोई अब इम्कान नहीं है हैक होने का, तो उस वक्त तक they were in touch with me. Huge यार, वरना कहाँ? It's huge, literally. मतलब I was like I think मैं उस रात सोई नहीं, and उसके अगले दिन I had a shoot to go to for like a video and I was like dude I don't know how I'm going to operate.
So yeah. बट अभी कम्युनिटी गाइडलाइंस ट्राई कर रही थी मेरे पास फेसबुक पे ना कॉन्स्टेंटली, सो आई अप्रोच फेसबुक। मैंने फेसबुक को फेसबुक पे ही अप्रोच किया था, मैसेंजर पे और Facebook is a little slow in replying. That's true. क्योंकि उनका आई थिंक दिस इज द एआई थिंग, उन्होंने बॉट्स बॉट्स दे रखे अरेंज द हैं. बॉट्स। I think human element को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता, no matter how much तो वो बॉट्स AI मुझे you एक ही work on. जवाब दे रहे थे हर बात पे। Exactly, yeah. And I was Human like, element needs to be there. Like that's why I was so satisfied with the YouTube का वो, because somebody was there to like talk to me. I did not get any like standard messages. Like मुझे लगा था कि हाँ, somebody is there who actually cares about my problem. So it was very you good. approach them from a generic email ID या कोई official email ID थी? नहीं, उनकी एक official email ID है. They have it on the yeah. So from my official ID, I was able to regain my Gmail access. I wasn't able to log into my YouTube. Basically, all of my emails were hacked. नहीं, I'm asking कि आपने जब उनको अप्रोच किया तो it was generic Gmail ID जो आपकी Yeah, होती है। मेरी जो Gmail है, तो मैंने उनको proof दिया कि this हाँ. is me. Okay. I sent them my screenshots and everything, Okay. and I gave them the proof कि it's been hacked and my videos are not there. So फिर they, asked me a few questions and then उसके बाद they helped me out. Okay. So let's talk about passive income. How and what do you suggest people who wanna, get this passive income stream created? Acha, so I think the best thing to do is, if you can, maybe start a business जो कि खुद अपने आप को एक पॉइंट पे आके रन करना शुरू कर दे, because it's very important कि you come up with some ideas जो कि maybe आगे जाके they can be like your main source of income if you don't want to be a content creator forever. So for example, I started a hair care business. Okay. And उसमें था कि शुरू में मुझे मेहनत करनी पड़ी, coming up with ideas, packaging and everything, making sure everything's streamlined. But then you can hire people who will sort of run the business So for this is you. your own hair care product? This is my own hair care line Okay. that I started. Okay. And we launched it like 6-7 months back. तो अभी है कि शुरू में it was tough because I had to manage everything myself. But then I was able to, the business was able to sustain hiring people who could, help me out with the business. So now I don't put in too much effort. Like I just oversee ऊपर से, but it runs itself and it's like a good passive income. Get the products created यहाँ पे? Yeah. Everything is made here. We like the packaging. Everything's done here. Packaging is also done. हम लोग actually घर पे करते हैं. So I've hired hired staff जो कि packaging करता है. अच्छा. So yeah. were you experienced in it? Not really. So basically, the idea came to me after I got married and I started losing a lot of hair. तो मैंने मुख्तलिफ concoctions बनाए, hair serums बनाए, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा था और मैं literally गंजी हो रही थी. तो आप खुद से experiments कर रही थी? खुद से अपने ऊपर experiment करी थी. पूरा 2020 और 2021 मैंने अपने ऊपर सिर्फ experiments किए हैं. And then I think 7 to 8 months in those experiments, I realized that this is working. So that's when we decided कि these serums are made by you? By me. And then उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि this would be a business. I just wanted something to stop the hair fall. But then my husband's like, you know what? Why don't you sell this? And I was like, why don't I sell this? So that's when we came up with Soul Care and I started making products, and then we started finding vendors for it. It took a year to do everything because it was tough. And उस टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई कुछ हो सकता है. I was focused on my job and content creation at that. So when you thought about making it live as a proper business, तो उस दौरान आपने initially team hire की थी? नहीं, उस टाइम पे नहीं की थी. So that's what I'm saying. Like I think anything to become your passive income, शुरू में थोड़ी सी मेहनत है, उसके बाद फिर वो stable हो जाता है. या फिर if you want कि बिल्कुल ही वो नहीं करना है, तो बस या तो पैसे जमा करके कहीं इन्वेस्ट कर दें. That's creating a business requires a lot of effort and energy and time as well. You did that. तो अभी आप business भी run कर रही हैं और you're into content creation thing fully. Yeah, fully. And you believe that this could be a main income stream for anybody? Maybe. I don't know if I want to be a content creator forever, right? I don't know. I have one But you're kid. setting an example today. Yeah. So let's see. Maybe I don't know, maybe 10 years के बाद nobody even wants to hear what I have to say. Maybe I'm So let's talk about that. Since a lot of competition is there, तब Instagram पे इतने influencers नहीं थे, अब हैं, YouTubers भी बहुत हैं. How do you keep yourself differentiated from others? क्योंकि अगर 10 साल बाद हम देखें, people would be expecting something very different. Yeah. अच्छा, I think यार डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अब इतने सारे लोग हैं, आप किस किस से अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे. मगर ये है कि इफ़ यू योरसेल्फ, आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है ना, वो थोड़ी बहुत आपको डिफरेंशिएट करती है दूसरे लोगों से. तो इसीलिए मैं अगर कोई मुझसे एडवाइस मांगते तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि जस्ट बी योरसेल्फ, बिकॉज दैट्स योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. वीडियोज़ बनाना,
कपड़ों की स्टाइलिंग करना वो किसी ना किसी की जैसी हो सकती है, बट लाइक यू एज अ पर्सनैलिटी इज द मेन थिंग जो कि सो आई डिफरेंशिएट थिंक करती वो है। जो पर्सनल टच है ना, योर बिल्कुल, वो जो आपकी रिलेटेबिलिटी है ऑडियंस के साथ ऑडियंस के में, साथ, या आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनके साथ, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग engaging एआई with और them, बॉट नहीं yeah, है। exactly, giving that पर्सनल thing कि टच। you are a real person, and हाँ मतलब I think being relatable and हाँ just being true to who you are हाँ। and just being yourself, I think these are the things जो आपको थोड़ा बहुत differentiate करते सो हैं यू दूसरे फाइंड द लोगों से। लॉयल फैन बेस। Exactly, yeah, have a loyal fan base, तो फिर वो आपके साथ रहते हैं। But the thing is, if you have like 500,000 followers, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे 500,000 आपके loyal fan like followers हैं। Maybe like a handful of 100-200,000 people would like loyal, बिल्कुल आपको follow करते हैं, loyal है आपके लिए। But ये है कि आप बस अपने just be yourself, and I feel like they'll stay, they'll follow you on your journey. ओके, कुछ गलतियां याद हैं जो कंटेंट क्रिएशन में की हो, सो दैट पीपल वुड लर्न फ्रॉम दैट दोज मिस्टेक्स एंड दे डू नॉट रिपीट इट। अच्छा, गलतियाँ, आई फील लाइक कि लिसनिंग टू फीडबैक, जैसे लोगों ने बोला ना कि आप इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, उर्दू में करें, तो पहले आई वाज लाइक वो कि आई एम जस्ट गोना डू व्हाटएवर आई फील लाइक डूइंग, बट देन व्हेन आई स्टार्ट लिसनिंग टू द ऑडियंस इट एक्चुअली हेल्प्ड मी ग्रो। तो या सो लाइक लिसन टू द फीडबैक, बट हाँ मतलब ये है कि फीडबैक वो जो एक्चुअली मेक सेंस, मतलब ये कि जाके अपने लिप्स को फिक्स करो वो वाली फीडबैक पे आई डोंट बिलीव, बट लाइक फीडबैक दैट मेक सेंस टू यू एंड बी लाइक हाँ ये ट्राई करके देख सकते हैं। तो जैसे ये है कि लाइटिंग थोड़ी सी बेहतर कर लें, या फिर किसी मुख्तलिफ आइडिया के ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो इस तरह की फीडबैक को आप इनकॉर्पोरेट करें तो पीपल विल एक्चुअली स्टार्ट फॉलो, लाइक they would be more interested, they'll be really happy to see, and then recommend your videos to other people कि you know what कि so you have to understand कि अगर कोई चीज़ अब जैसे आपने कहा कि कुछ अगर नेगेटिव है, you have to you know skip that also. Yeah. तो हर फीडबैक को भी नहीं सुनना, बट जो पोटेंशियल जिसमें पोटेंशियल है टू इम्प्रोवाइज और आपके कंटेंट को बेहतर कर सकता है, देन व्हाई नॉट। आई रेड अ कमेंट ऑन माय फ्यू कुछ 4-5 वीडियोस पहले एक वीडियो मैंने डाली थी, उस पर कमेंट आया, प्लीज रिमूव द बैकग्राउंड म्यूजिक फ्रॉम योर पॉडकास्ट। मैंने जब सुना था तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, पर समवन हैज सेड इट, और फिर मैंने जब अगले वालों पे गौर करना शुरू किया, लिटरली इट वाज अननोइंग। मैंने कहा यार अगर एक बंदे ने भी कमेंट डाला है ना, तो इसका मतलब मे बी मोर पीपल फाइंड इट अननोइंग, क्योंकि हर कोई जाके लिखता नहीं। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, नॉट कि आप पे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं मतलब can't think about it, that's my taste, right? But like something like that, lighting, voice quality, that can be fixed. So today अगर हम बात करें ख़वातीन की, बहुत कम है जो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में यार काम करने में, मैं देखती हूँ बहुत कम ख़वातीन, क्योंकि अगर मैं अपनी इंटरव्यूज़ की लिस्ट भी बना रही हूँ ना, तो आई प्रेफर कि मुझे इंटरव्यूज़ ख़वातीन मिलें, एंटरप्रेन्योर्स हों, सीईओज़ हों, बट देन आई एम शॉर्ट ऑफ सच फीमेल्स। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी भी हमारी सोसाइटी में चीज़ है, दे डू नॉट अलाउ यू नो वुमेन वर्किंग और गोइंग आउट, एंड स्पेशली कंटेंट क्रिएशन पे अगर हम बात करें, यू आर ऑन कैमरा, लकी यू दैट यू गॉट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड इन लॉज। वो कंटेंट क्रिएटर्स जिनको वहाँ परमिशन इशूज़ फेस करने पड़ते हैं, देयर यू नो देयर फर्स्ट स्टेप पे वो इनका इतना चैलेंज है कि वो उसको ओवरकम नहीं कर सकते। Did you face any challenge like that? No, I think starting में it was a little difficult to explain to people कि content creation क्या है. It's not like modeling or acting. क्योंकि आप अपने घर में रह के अपनी मतलब अपनी खुशी से कर रहे हैं, आप अपने रूल्स खुद ही सेट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई challenges नहीं थे जिसमें कोई परमिशन इशू हो. बट हाँ, थोड़ा सा ऑन बोर्ड करने में मुझे एक्सप्लेन ज़रूर करना पड़ा कि ये है क्या चीज़, कौन लोग देखेंगे, किस तरह की वीडियोस होंगी, ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस हुई थी। एग्जैक्टली, जस्ट मतलब दे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स तो ना हो, क्या सीन है, मतलब हर चीज़ ठीक होगी, कुछ ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिससे कोई कुछ लाइफ थ्रेटनिंग हो, तो ऐसी चीज़ें हाँ ये डिस्कस हुआ था। Was it ever life threatening by the way? यार I feel कि कहीं ना कहीं this is very risky. हाँ, at times it can get risky. It can. So the thing is कि you have to be a little smart about it कि don't like post about your where you live, your address. हर किसी को ना दें आप, ज़्यादातर उन लोगों को दें जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और मतलब मेक श्योर कि जहाँ पे दिस इज़ अ रूल दैट आई हैव डन कि अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग समवेयर विद माय फैमिली, आई नेवर पोस्ट इन लाइव format. Like if I'm there, I'll make the stories, then I'll come home and then I'll post. So nobody will really know कि where I am live at that very moment. So like it'll already have happened. मैं घर पे आ गई होंगी and then I'll post about it. So that's just something that ये मैंने अपना खुद रूल बनाया है कि just for my safety, I won't post live. Okay. Yeah, I'll post a little later. So while closing the interview, what tip exactly you'd like to give to young content creators? वैसे आपने बहुत सारी दी हैं, but I'm sure one thing you'd like to mention. I would want to say anyone who comes into content creation or any field for that matter, it's important for them to understand कि it shouldn't always be about the money. मतलब money is obviously
an important aspect of it, but starting में don't think about it because that could be very demotivating. कि foreign से जाऊँगी मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगी, ऐसा नहीं होता है. It doesn't happen overnight, and ये किसी भी job में नहीं होता है. तो always finish your education and don't leave it. Like बहुत से लोग job छोड़ के करने शुरू करते हैं. I would always say कि finish education and maybe start content creation as a side hobby, and then आहिस्ता आहिस्ता it will give you the results जो के हैं. But money is the only attraction for the students. वो join इसीलिए करते हैं हाँ, यार मगर मेरे ये- monetization हो जाएगी, चलो यार पैसे कमा मगर लेंगे। ये बहुत आई थिंक दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग, क्योंकि जब नहीं हो रही ना तो फिर बहुत जल्दी डिमोटिवेट और होते फिर हैं. वो सस्टेनेबिलिटी में भी हाँ, नहीं आप नहीं you रहते have to be really like you really want to do it. Content creation is a passionate field. Like you have to be passionate about it. वरना फिर आप बोर हो time जाएंगे बाद। कुछ टाइम बाद. you're just like मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि if you're passionate about it तो फिर आपको आइडियाज आना शुरू होते हैं, आप फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं, फिर वो मोटिवेशन से आपको और आइडियाज आते हैं, and then one thing leads to another and you keep creating content. So once you really want to do something, तो वो जो आपका ब्रेन है ना वो 360 डिग्री उस चीज पे काम करता है. ऐसा नहीं होता कि बस आपने काम कर लिया. सिर्फ पैसे के गोल से आएंगे ना तो मे बी इट आप उस माइट तरह से वर्क. सोच नहीं सकते. It might work, it might not work, and then you'll get हाँ. demotivated really quickly. हाँ, okay. So I think this was a very good advice. अगर मैं बात करने चाहूँ तो फिर वो चलती ही रहेगी. But thank you so much Anushae for giving us a really good experience. ये पर्पस है हसल का. तो जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से अब अगले आने वाले सीखें. बिकॉज वो कहते हैं ना हर चीज़ अगर खुद एक्सपीरियंस करोगे, हर एक्सपेरिमेंट अगर खुद करोगे तो बहुत वक्त लगेगा. Learn from other people's mistakes. That's true. I'm a firm believer of that. अगर आपको मिल सके दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से लर्न करने को, that's the best. You can improve on yourself. And you helped. I'm sure you helped a lot of people through this video. I'm glad. So thank you so much for inviting us, and thank you so much for being ready for the interview, because a lot of influencers are like this, so they're so egoistic. Because Junaid Akram was the one who was ready, because I started recently. You know, I'm saying this on camera because अगर मैंने अभी शुरू किया, it will take a lot of time for me to reach people who are a lot much popular. Yeah. You know, right now. And Junaid Akram was very kind. He was ready to get the interview done, and so are you. So that is the reason I'm saying thank you to you, because you're available for the audience for a good cause. I'm really happy that you guys are here. I mean, I'm always open to collaborating with people who are especially new in the field, because I feel like one thing that I've learned is because I was never given a platform to sort of grow from. Like मुझे लगता था कि I have to like work very hard and nobody's giving me that platform. Even though कुछ platforms थे उस time पे, but they never really acknowledged me. So when I've always wanted to sort of acknowledge people so that maybe I can be their stepping stone for them to move up. So this has been like something that I've always wanted to do for people, and I feel like in my career so far I want to say I have been a stepping stone for a lot of people who have become a little famous. So like I just wanted to like give people opportunity. Mashallah, mashallah. That's so nice. Thank you so much, Anushae. Thank you for coming here.